Hello everyone, Jai Hind my dear students. Welcome back in biology classes with Chandrakant sir. Student, nowadays we are dealing the chapter human health and diseases. In this chapter I have already told you about the basic ideas. Clear? I have told you about the health, I have told you about the diseases. In my last video I have told you about the types of diseases on the basis of microorganisms or on the basis of mode of infection. Clear? So now our today's lecture is based on the topic that is the transmission of the diseases. In this video lecture I am going to explain you about the various modes of transmission of the diseases. Means how the diseases are transmitted from infected person to the healthy person, or how a healthy person get the disease. Clear? So before going in detail, I would like to tell you about the pathogen first, which I have already told you in my previous lectures. So pathogen are the disease causing microbes. Clear? Or you can say the organism that causes diseases, they are called as pathogens. So pathogens may be microorganisms like bacteria, like viruses, protozoa, fungi, chlamydia, mycoplasmas. These are the various microbes. Clear? And there are certain multicellular pathogens. ये बहुत important है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. तो multicellular pathogens are the helminths like Taenia solium, like Ascaris. They causes the teniasis as well as the Ascariasis. Clear, student? So I have given you idea about the pathogen. Clear? And now let me tell you what are the various routes through which the pathogen enter inside the body. Clear? In very short and very brief, I would like to tell you that the pathogen enters through the oral route. When we eat something or when we take the infected food item, the microbe, they find their way. Clear? And at the time of inhalation they can enter, yani through mouth, through nose, through ear, through eyes, and through the dead, you can say injured skin or the wound, you can say, or if there is any cut in the body, the microbe, they find their way to enter in the body. Clear, students? So these are the various points through which the microbes enter in our body. Clear? ऐसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी चले जाते हैं, इन्फेक्टेड नीडल से भी चले जाते हैं. Clear? So I have given you the basic ideas. There are certain organisms which enter in the body through the anus also. Clear? Anus, student. So these are the various routes I have told you through which the microbes enter in the body. Clear? I am just telling you one sentence, a very important sentence that is written in the NCERT also. Clear, student? Ki what happens when microbes enter in the body? Clear? So when microbes or the pathogen enter in the body, what they do? They multiply in the body. Clear? सबसे पहले तो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं. दुश्मन अंदर गया, अपनी संख्या बढ़ा लिया. Clear? And they interfere with the normal vital activities. Clear? After their entrance in the body, what they do? They interfere with the normal functioning of the body. Clear? Then what happens? They affect the vital activities, resulting in the morphological and functional damage. Clear? Morphological and functional damage हमारे बॉडी में दिखता है. क्लियर? हमारी बॉडी की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए, बॉडी में रैशेज हो गए. क्लियर? सम गॉल डेवलप्स, है ना? तो so many you can say sign and symptoms appear. Clear, student? So when pathogen enter in the body, they multiply in the body, they interfere with the various vital activities, है ना? And thus sign and symptom appears, यानी some morphological changes we observe, some physiological changes we observe. Clear, student? तो अब next topic हमारे क्या है? I am going to tell you about how does a disease look like. How does a disease look like? So अगर आपसे कोई पूछ दे कि बीमारी कैसी दिखती है, तो definitely if you are smart you will say that sir in the form of sign and symptom. Clear? How does diarrhea look like?
कोई बताएगा? डायरिया ऐसे देख के थोड़ी कोई बताएगा. सो साइन एंड सिम्टम के थ्रू आएगा. जॉइंटिस, डेफिनेटली साइन एंड सिम्टम्स आर देयर. पूरा बॉडी पीला हो जाता है, इट बिकम येलोइश, आईज बिकम येलोइश, नेल बिकम येलोइश, क्लियर स्किन बिकम येलोइश. सो इट्स अ सिम्टम ऑफ व्हाट? A sign of what? Jaundice. So let me clarify here what is the meaning of sign and symptom here. Clear student? Suppose that you have got a fever. So fever, it is symptom, not the sign. If you have the headache, it is the symptom, not the sign. If you have stomach ache, this is symptom, not the sign. Means symptom gives the idea that something is wrong in the body, but it never gives the idea about the accuracy of the disease. Clear? सिम्टम ये बता देगा कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं देगा कि किसकी वजह से है, कौन सी बीमारी. क्लियर स्टूडेंट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द साइन, इट गिव्स आइडिया अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द डिजीज. अगर आपकी आंखें बहुत लाल लाल हो रखी हैं, दैट डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम कंजक्टिवाइटिस. क्लियर? रनिंग नोज इज देयर, watery eyes is there, coughing is there, fever is there, definitely it's a sign of common cold. डॉक्टर दूर से देख के बता देगा, यानी you are suffering from common cold. Clear? All the pathological tests which are performed, they are the sign, they give the idea about the accuracy of the diseases. Clear student? So I have given you the idea about the sign and symptom. Clear? One important sentence which you have to remember is that pathogen have to adapt to life within the environment of the host. यानी पैथोजन जब बॉडी के अंदर जा रहा है तो इन्फेक्शन कॉज करना है, तो उसको वहाँ पे एडेप्टिव फीचर डेवलप करने पड़ते हैं. क्लियर? द ऑर्गेनिज्म विच अडेप्ट इनसाइड द बॉडी, दे सर्वाइव एंड दे क्रिएट एबनॉर्मलिटी, दे क्रिएट प्रॉब्लम. एंड द पैथोजेंस विच डू नॉट adapt, clear, inside the body, so they cannot survive in the body. Our immune system will definitely destroy those pathogens. Clear student? So I have given you the basic concept of sign and symptom. Clear? Now come to the point, transmission of the diseases. Clear student? So transmission, there are two types of transmission, direct transmission and indirect transmission. Clear? What do you mean by the direct transmission? यानी how the diseases are transmitted directly, सीधे कैसे पहुंच जाती हैं. Clear? So it is of various types, you can see yeah, various modes are there. Don't say type, you can say various modes are there. Clear? So first is the direct physical contact. Clear? Suppose that you are going to kiss someone, so it's a direct contact. You are shaking hand, this is the direct contact. Shaking hand is the direct contact. Clear? Kissing, shaking hand. Then sexual intercourse is the direct contact. Clear? So if a person is suffering from one or more diseases, so diseases are directly transferred from that infected person to the healthy, if the healthy person comes in the contact. अगर किसी infected person की direct contact में अगर कोई healthy person आता है, तो बीमारी बड़े आसानी से उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है. क्लियर? सो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट, इट इज वन ऑफ द कॉजेज. क्लियर? किसिंग, शेकिंग हैंड, क्लियर, हगिंग. सो these are the you can say various modes through which the diseases are transmitted directly. Example, you can say ringworm, athlete's foot, chickenpox, smallpox, STDs. ये क्या है स्टूडेंट? ये STDs में गोनोरिया, सिफिलिस है ना. ये all these are what? These is spread due to the direct physical contact. Clear? Second is the droplet method of infection. Clear? And nowadays the COVID-19 corona cases are increasing day by day. So ये liquid droplet method से ही फैलते हैं. Suppose a person coughs, a person is suffering from any infectious disorder and he coughs or sneezes, clear, or even talks in front of a healthy person. So the liquid droplets or the mucus, infected droplets that comes out during sneezing, coughing or talking,
clear, they contain the disease causing microbes and that are easily inhaled by the infected person, by the healthy person, clear. So student, it is advised to wear a mask, clear, क्योंकि इसी रूट से वो अंदर जाता है ना। तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे भी ये बीमारियां फैलती हैं। एग्जाम्पल निमोनिया है, वुफिन कफ, बम्प्स, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, कॉमन कोल्ड, क्लियर। सो दीज आर द डिजीजेस, कॉमन कोल्ड, मम्प्स, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये इसी मेथड से फैलती है, ड्रॉपलेट मेथड से, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट मेथड, क्लियर। नाउ कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, क्लियर। इसके एग्जाम्पल टिटनेस है। Suppose that you are playing in the playground, or you met with an accident, clear, you come in contact with the soil, your injured skin comes in contact with the soil, so there are certain bacteria which remains in the soil. For example, tetanus bacteria is there, clear, tetanus bacteria, it remains in the soil, तो वहाँ से वो आपकी बॉडी में इंटर कर जाएगा, इंजर्ड स्किन से वो अंदर चला जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। सो ये जो सॉइल होते हैं उसमें भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स रहते हैं, ठीक। बाय एनिमल बाइट, बेस्ट एग्जांपल आप जान सकते हो, रेबीज। इफ ए इन्फेक्टेड डॉग इज देयर, इफ दैट इन्फेक्टेड डॉग बाइट्स विद अ हेल्दी पर्सन, इजीली ट्रांसमिट द वायरस ऑफ द रेबीज। जो रेबीज से इन्फेक्टेड डॉग होता है उसमें उसके सलाइवा में वो रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, रेबीज के वायरस होते हैं, जब वो किसी को काटता है तो इजीली वो चला जाता है बॉडी में। नॉट ओनली रैबिड एंड डॉग्स, रैबिड एनिमल्स आल्सो, मंकी है, इवन गिलहरी है, ये सब भी अगर काट ले तो इन्फेक्शन इजीली फैल जाता है, क्लियर स्टूडेंट। कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल अगर आपको बाइट करता है तो वो पहुंच जाएगा, या इन्फेक्टेड जो इंसेक्ट अगर वो बाइट करता है तो बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, सीधे सीधे आप बोलो, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, थ्रू द प्लेसेंटा, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस समटाइम्स कि इनिशियल स्टेज में जो प्लेसेंटा होता है, जो फीटस जो मदर की बॉडी से कनेक्टेड रहता है जिससे, क्लियर, दैट प्लेसेंटा इट नेवर ट्रांसमिट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, the microbes they enter in the fetus body through the placenta, clear, and the fetus easily get the disease from infected mother. Infected mother से भी क्या होता है, वो डिजीज बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, यानी infected mother का ब्लड बच्चे के कांटेक्ट में आ जाता है during the later stages of development, so the fetus easily get the disease. So student, these are the direct transmission mode, clear. Now let me explain you about the indirect transmission. Indirect transmission क्या होता है, let us see. Indirect transmission, clear, arthropods vector, यानी vector borne disease, है ना, यानी vectors they play a very important role in transmission of the diseases, वो बीमारी को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, क्लियर। आर्थ्रोपॉड्स सबसे बड़ा ग्रुप होता है एनिमल किंगडम का, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, यू नो। उसमें एंड्स है, कॉकरोचेस हैं, हाउस फ्लाई हैं, हाउस क्रिकेट है, क्लियर, बीज वगैरह हैं, तो बहुत बड़ा ग्रुप है ना। देयर आर मेनी आर्थ्रोपॉड्स विच ट्रांसमिट द इन्फेक्शन, क्लियर। जैसे हाउस फ्लाइज की हम बात करें तो हाउस फ्लाइज दे आर द कैरियर ऑफ व्हाट, कॉलेरा, इससे कॉलेरा फैलता है, टाइफाइड फैला सकती है ये बड़े इजीली, क्लियर। उसके अलावा ये डायरिया वगैरह भी फैलाने में हेल्प करते हैं, क्लियर। सो हाउस फ्लाइज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्यों? दे सिट ऑन द इन्फेक्टेड, यू कैन से इन्फेक्टेड फीसेस, dirty feces, garbages, where there are a variety of microbes, disease causing microbes are there, clear। वो मक्खियाँ होती हैं जो ऐसी गंदी जगहों पर बैठती हैं जहाँ पे इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ से जब वो हमारे खाने पे आती हैं, when they come and sit on our food material, easily they leave the pathogen there. So house flies they play a very important role in transmission of the diseases, clear student। Even if you will not cover the cooked food, if you leave the cooked food as such, clear, then cockroach they will definitely they will move to that food, है ना। they also contain
डिजीज कॉजिंग पैथोजन इन देयर बॉडी, है ना, वो गटर में रहते हैं, गंदी जगहों पे रहते हैं, वहां से हमारे खाने पे आएंगे एंड दे ब्रिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो आर्थ्रोपॉड्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आर्थ्रोपॉड्स में ही देयर आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्लियर? आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू एग्जांपल्स, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल। जैसे ह्यूमन ब्लड लाउस स्प्रेड्स टाइफस, जो हमारे सिर में जुएं रहती हैं उससे भी बीमारी फैलती है, दैट बीमारी इज द टाइफस, दैट डिजीज इज द टाइफस। क्लियर? rat flea is there, rat flea is an insect, clear, it spreads the bubonic plague, clear. Then tsetse fly, clear, it spreads trypanosoma which causes what? Sleeping sickness. Then sand fly, it is the carrier of the vector of leishmania donovani, it causes kala-जार, clear. Aedes mosquito yellow fever chikungunya फैलाता है, clear. When we talk about the culex, पढ़ोगी, you have to study the filaria बीमारी, you have to study the filariasis, you have to study the you can say field paw हाथी चक रोग, है ना, उसमें you will see the role of culex. Culex is the vector of what? Filarial worm, वो चिलेरिया ब्रैंकोफ्टाई का कैरियर होता है, वो उसका वेक्टर होता है। एनोफिलीज, इट्स अ कॉमन नेम, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज व्हेन बाइट्स द हेल्दी पर्सन, इफ द फीमेल एनोफिलीज इज इन्फेक्टेड with the malarial parasites, when it bites the healthy person, it leaves that parasite in the body of the affected person, body of the you can say healthy person, and thus causes malaria. Clear students? So ये था arthropods vector. उसके बाद हम बात करते हैं vector-borne methods. Clear? So vector-borne means क्या? When we eat the infected food and water, when we drink the infected water, contaminated water. Clear? When we eat the contaminated food, तो वो इस मेथड में आता है vector-borne मेथड में, ठीक है ना। यानी some of the diseases are transmitted through the you can say blood also, है ना, through the infected blood ट्रांसफ्यूजन से भी चला जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड है तो उससे भी चली जाती है बीमारी, है ना। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड which is to be transfused should be checked, जो ब्लड चढ़ाना है उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? नाउ फोमाइट बॉर्न डिजीज क्या होता है? फोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोमाइट आज की डेट में कोरोना के केस में फोमाइट इन्फेक्शन ही होता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमन कोल्ड ये फोमाइट बॉर्न डिजीज होता है, एक तरह से आप कह सकते हो। यानी एनी आर्टिकल विच हैज बीन इन कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्शन। क्लियर? कोई भी चीज जो इन्फेक्शन के कांटेक्ट में रही हो, अगर हमको कॉमन कोल्ड है, डेफिनेटली आई विल टच माय नोज, आई विल टच दिस मार्कर, आई विल टच द डोर हैंडल्स, है ना। किसी को कोरोना है, कोविड-19 है, अगर वो जिन जिन चीज़ों को छुएगा डेफिनेटली वो वायरस वहाँ फैलाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो फोमाइट बॉर्न डिजीजेस, क्लियर, लाइक इन्फेक्टेड हैंकरचीज, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अपना हैंकी किसी से शेयर नहीं करो, ना किसी का लो ना किसी का दो। डोंट यूज द टॉवल ऑफ एनीवन, यू यूज योर पर्सनल टॉवल। क्लियर? अपना बेड शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। सो हैंकरचीफ, टॉवल, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, डोर हैंडल्स, टैप, नल है, सोप है, सिरिंजेस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो यहाँ से भी इन्फेक्शन बड़े इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर? सो ऑल द पब्लिक प्लेसेस वेयर वी यूज द टैप, है ना, तो वहाँ से वी कैन इजीली गेट द डिजीज। होटल में गए, स्टे कर रहे हैं, तो वी शुड इंस्ट्रक्ट द मैनेजर टू चेंज द बेड शीट और द बेड कवर और द पिलो कवर। क्लियर? वी शुड ऑलवेज आस्क हिम टू गेट द व्हाट? स्टेराइल टॉवल। क्लियर? वहाँ से भी हम लोग को ये बीमारी मिल जाती है। देन we are if we are traveling in the public you can say transport, बस में है, ट्रेन में है, एरोप्लेन में है, तो यहाँ से भी इन्फेक्शन बहुत इजीली चला जाता है ना। तो these are the various modes of transmission of diseases। उसके बाद अनक्लीन हैंड, अगर आपके हाथ भी साफ नहीं हैं, गंदे हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो उन गंदे हाथ की वजह से भी बीमारियाँ फैलती हैं। सो इट इज़ एडवाइज टू वॉश योर हैंड 2 times 3 times।
क्लियर। आजकल तो बहुत अवेयरनेस क्रिएट कराई जा रही है लोगों में, बच्चा भी जानता है कि हाथ को साबुन से 20 सेकेंड तक धुलना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद ह्यूमन कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैरियर, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, देयर आर सर्टेन ह्यूमन बीइंग्स which are the carrier of diseases like diphtheria and typhoid. Actually they develop immunity against this disease, clear, but they contain the infected, you can say they contain the infection, लेकिन खुद हेल्दी दिखेंगे, सब कुछ है, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन they spread the disease. क्लियर। आप टाइफाइड में पढ़ोगे, मैरी मैलन के बारे में पढ़ोगे, है ना, वो टाइफाइड कैरियर थी, कभी इन्फेक्टेड थी, लेकिन उस पर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में था, वो स्प्रेड करती थी, लेकिन खुद उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं फैला, है ना। सो ये होता है ह्यूमन कैरियर। क्लियर स्टूडेंट। सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द diseases. I have explained you about the direct transmission and indirect transmission, student. So you go through with this video twice, thrice. You have to focus on the examples. It's a very simple topic, general topic, clear. आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, you will be able to understand this topic. It is not very tedious or which is not very it is not very tough topic, clear. So I hope that you have enjoyed this session. Clear student. So next video में I will come with another topic, another interesting topic of this chapter. Clear. Till then keep on watching my video, students. Have a nice day. Stay healthy. Stay safe. Thank you very much.